गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू कुटुम्ब। और जैसा कि आपको आज का एजेंडा बताया गया था कि आज जो हम डिबेट सेशन करने वाले हैं और इसका टॉपिक है कोटा फॉर लोकल्स इन प्राइवेट जॉब, जिसमें आप हम लोग दो ग्रुप बनाएंगे, जिसमें एक ग्रुप को लीड करेगी वंदना और एक ग्रुप को लीड करेंगे आकाश। और जो भी फॉर के लिए बोलना चाहते हैं या अगेंस्ट के लिए बोलना चाहते हैं वो बता देंगे। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल मेंबर भी हैं जो नजमा शरीफ हैं, जिनका कोचिंग में बहुत इनरिच एक्सपीरियंस है और वो कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस देती हैं। तो जो हमारा सेशन होगा डिबेट का, उसके बाद वो इस पे एक डिटेल फीडबैक भी देंगी कि किस तरीके से हम अपने स्पीच को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को और बेटर कर सकते हैं, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ओवर टू नजमा। Yes, thank you, Vaibhav, and welcome everyone, and thank you for inviting me. I am Najma Sharif. I hail from Bangalore. I carry a 14 plus experience as a corporate trainer, where my core fundamental job was to train the new joinees and make them employable, be it communication on their mindset, on their business etiquettes, and process product. So that is where I got the understanding that we need to fill the gap, making them employable. So I am doing my own individual coaching. So now from past few years I'm into coaching, and wherein I train not just students. I have working professionals from lawyers, doctors, engineers, and from various mid-career professionals to leadership training we provide. And what is my emphasis is having a better communication in your career growth. How speaking well, how putting your points forward in a more effective way can help you grow in your career. That is my niche, and this is the core agenda of today's topic as well, where we are discussing on this major topic, which is quota for locals at jobs. And we have two teams. One team will be leading by Akash, the other team will be leading by Vandana. And you can select which for you are speaking for or against, and then later we will give you the feedback on this. Okay, we are good to go. Am I too fast or too slow? You just tell me. If at all, anywhere, if you don't understand, you can tell me. I can translate. I know local language as well. So we will do that. Ramya, are you comfortable with the language? Yes, sir, I'm comfortable, but I need once Kannada explanation. Okay. Okay. All right. So we'll try wherever possible, we'll try to translate. Okay. And for Rekha ji convenience also, we can be in little bit of Hindi also. Hindi. Okay. हाँ, जैसे Yeah, रेखा we, जी का we will keep पॉइंट। it this conversation as a multilingual. हाँ, तो रेखा जी का हिंदी में भी रहेगा पूरा, और उनके मतलब ओपिनियन जानना जरूरी है। Yes. और हम And लोग moreover, I speak very basic words. I don't, use complex words and making others difficult to understand. ओके। Okay, let's begin. ओके, विवेक जी इज आल्सो ज्वाइनिंग, वन मोर पर्सन इज ज्वाइनिंग। जस्ट अ मिनट। Yes. विवेक जी, थैंक यू फॉर कमिंग। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? Yes. ऑलराइट। Hi, Vivek. I'm Najma. हाँ मैडम। Yes. आई थिंक इज नॉट इन द राइट background. What we can do is that we can explain, I will explain him shortly, in brief, and then we can begin. Yes, yes. विवेक जी, हम लोग जो टॉपिक है हमारा आज का, कोटा फॉर लोकल्स इन प्राइवेट जॉब, उस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, डिबेट करने जा रहे हैं। तो आप उसके फेवर में बोलना चाहेंगे, अगेंस्ट में बोलना चाहेंगे? अगर फेवर में बोलना चाहेंगे तो वंदना, आप फेवर में बोलना चाह रही हैं वंदना? Yes. हाँ, तो जो भी वंदना के साथ जो भी फेवर में बोलना चाहते हैं इसके, तो वंदना के साथ बोल सकते हैं। और जो
अगेंस्ट में है वो आकाश के साथ जाएंगे। फेवर मतलब इन द सेंस लाइक कोटा शुड बी रिजर्वेशन देयर, होना चाहिए। होना चाहिए। ओके, हाँ। आई Job विल बी देन। reservation for locals. This is the topic. Job reservation for locals. Vandana is speaking the all the good things about that. ओके, And what are the negative impacts of that? Akash team will talk. डन डन। Okay. ओके, तो वंदना के साइड से कौन कौन है, कौन कौन फेवर में है? Who all support this job reservation for locals? Who is in Vandana's team? Raise your hands. मैं आऊंगा। वंदना, आई Okay. एम इन योर टीम। Vaibhav. Okay. Then Rekha ma'am, आप for बोलेंगी against मैं बोलेंगी? आकाश की तरफ से। Akash. Okay. Against. सुमित। Sumit. I will be speaking against it. Akash team. Okay. Sumit ओके। is in Akash team. Okay. आदित्य। वन्ना। ऑल राइट। रम्या। I'm in against him. ओके। Akash team. Vivek ji. I am Vandana team. वेल डन, वेल Okay. डन। Very वी आर good. गुड टू गो, वी आर गुड टू गो We are नाउ। good to go. So wherever possible, I'll share my insights. हाँ। Okay, I'll be on speaking on both the teams. I'll share my insights. Additionally, at the end, I'll give you the review and my opinions. Okay, good to go. ओके। All right. ऑल राइट। वंदना, विल यू ओपन? Yes, sure. So, welcome, ladies and gentlemen. It's my pleasure to introduce a huge topic in front of you. Namaste. So, first of all, starting with the main important problem of our life issues. Quota for uh, locals in private jobs. I know there is a less reservation for peoples, but 50% from 100, it's their reservation. If peoples try and work hard to we achieve that job, they can also enter in private jobs. Locals are also right now getting maximum opportunity and to prove them as equally. Today, it's understanding that uh, today we will judge peoples on their gender basis. And it is defined that every gender has given a actual percentage of reservation in society, in private jobs or government jobs for local. Both sectors are open for everyone. Like there are three sectors: primary, secondary, tertiary. Secondary and tertiary are private jobs. Most of locals are working like home delivery or transportation. They are there are more the locals. So this doesn't depend that what is a reservation. If we will try our work hard and we will motivate us to do that thing, we will can uh, achieve that. Recently, yesterday, a topic has came. Many of the peoples are fearing of jobs because of AI. AI is not a problem. AI is a challenge, a situation that you have to uh, work on it, get awareness that today time the AI is taking jobs because AI is doing the work faster and every management need. वंदना, वंदना, you have to stick Yeah. to the topic also. That I don't think it's relevant, and we let them also speak. So Okay. I'm Thank interrupting you. you for that. Who wants to speak on this? Yes, I think the
topic, let us keep the discussion relevant to the topic, which is job reservation for locals at private companies. Okay, हाँ, this is the topic. So you can think of the points which are for what is the benefit of having that reservation for local in the private sector, and what is the ill effects of not allowing outsiders for those jobs. So let us keep the agenda and discuss on that. Yes. Who will say against now? So I'll open up with my view that against local quotas. And the first issue that I will raise is that uh, I'll strictly go towards economy. That what economic issue that it will create on the state, which is having local quotas. So when a state puts a local quota on any of the states, the major issue will be that global companies which are looking for diverse people who have very good skills, they won't be able to come to that state because local reservation will be more in that, and this will create a lot of less investment in that state. Um, okay. I would like to counter this point of Akash. I'm totally not totally, but I have a lot of valid point where I stick to this point that reservation is required for locals. Just imagine that you come from UP or Bihar, where the least companies are there, where the opportunity is the least. And when compared to the cities, metro cities like Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, and these states have the more opportunities because the companies are there. But you have to leave your home, leave your parent, leave your all the things behind and go to the other state and work there. You have to follow the rules of those states, get humiliated there. You don't feel welcome there. And back you are made feel like you are from Bihar, you are from UP, you are meant for labor jobs. Such kind of allegations are put on you. And if you are talking about economical growth, then where is the holistic growth for us? If the holistic growth is not there, the economy will anyways will collapse. The tax paid by the women in Kerala is highest, where and the population of Kerala is 3.5 crores, and the population of Uttar Pradesh is 25 crores. But still, the women in Kerala is paying more taxes because we have focused on limited states and not on the holistic growth of the economy. It is the failure of the system. I would like to counter this point of Vaibhav. I agree with Akash. What Akash meant to say when he is talking about financial issue is the companies has to spend more money on training the locals where the talent, the efficient people are available outside, so they can easily bring them in and employ them. But instead, since this quota is there, we cannot bring in people from outside, that we have to fill the 50% or whatever percentage is mentioned. So then the companies has to spend more money on training the local people to bring up their standards. So instead, if companies are allowed this quota reservation, if it is abolished, then companies are free to hire people from outside states, where the employment, we will create more employment opportunities for everybody. And as you have told that humiliation part, I totally disagree. I stay in the metropolitan city of Bangalore, and I have seen people throughout India who come to Bangalore for looking for a better future and career prospects. We respect them, we welcome them, and additionally, we never force them to learn the local language also. And moreover, Bangalore is more open and more global city, and here everyone speaks multiple languages. So language barrier is not there, and we never disrespect anyone. And throughout India, we ultimately we are Indians. States are just divisions But with Nazma, you have to see that what happened in the summer month of in Bengaluru. We went through a means deep water crisis and the unsystematic development of Bengaluru. Why? Because the immigrants are here from all the states, all over the India, all over the pan India, from pan India. Why Yes.
because we are making one state and a bigger city, and others are lacking. जैसे हिंदी में कहते हैं ना, एक इंसान को राजा बनाने के लिए आप 99 का गला घोट देते हो। तो वो नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पे मतलब एक होलिस्टिक ग्रोथ होना चाहिए, जहाँ पे बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, हरियाणा में भी, हर जगह लोगों के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो अपने स्टेट में रह के काम कर सकते हो। फिर जो एक तो 100% तो नहीं मांग रहे हैं, 25% ओपन है वो All बाहर के right. लिए भी। Okay, so what Coach Vaibhav is trying to make the point is we need to develop same development to other cities as well. How Bangalore has developed. Bangalore was initially not a metropolitan city, but it grew exponentially. So this type of growth, if happens in other cities also, the immigrants will be less. People won't flock to one city and make it crowded, and we have shortage of resources. So let's listen to other people as well. Let's park this point. We will surely take this point ahead, and we will have a discussion on the same. So who will go next? Yes, Akash, you want to say So something? I have one point. Considering the point of you, like people facing humiliation, once I will ignore the point of like economy, and I'll not think about it from the point of people perspective. A guy from a tier 2 or tier 3 city comes to a city like Bangalore, Delhi, Mumbai, Chennai, just to search for a job which will give them higher pay, give them professional competency, collaborate with people who are skill minded. But why, Akash? Why? How it is? Because it is Let me that complete my point. no, it is Okay. important to me to speak that it is not available there. The point which I raise is that it is that those companies are not in their state. That's why this is happening. What you are seeing. Okay, if I take example of my city like Varanasi, they don't have the resource or land to build a company or a business park there. A company like a Big Four can never come to a tier 2 city because it won't be able to get only not skilled labor there, because the top universities are also in the bigger cities. We have So BHU, we have a lot of temples. We have It's a tourist destination it of. is a tourist destination. It can't Ah, become a hub like a IT hub, which is Bangalore but itself. we can expand the city. We can take, like in Bangalore, we add other It was off क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था. closer means nearby cities like Bidadi, Kolar. In Bengaluru, they are developing like that. Chikbalapur, they now Isha Foundation has opened their branch in Chikbalapur. Why? Because they want to be near to that city. Mumbai expanded to Thane, Navi Mumbai. Like that, you can expand Varanasi to Navi Varanasi. Why can't that is possible? All right, Vaibhav, let the others speak and then we will take up this point. Yes, who will speak from Vandana's team? I was speaking. Aditya, okay. From Aditya's team, who will talk the next point? आकाश आकाश टीम। रेखा जी आप बोलेंगे। सुमित। Sorry, Akash. Rekha, Sumit, Ramya, anybody? मैं आकाश की टीम से कुछ बोलना चाहूंगा. I want to say something for Yes, against. Sumit, go ahead. I think that one point that I want to mention is that the lack of competition. We have all हम सब ने पढ़ा है कि competition बहुत लोगों के लिए, जो लोग प्राइवेट सेक्टर जॉब में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में जो काम करते हैं, उनके लिए फॉर देम competition is a big motivator to work better, to work harder. And I think when we cut down the cohort of people to only 50%, even the half of the workforce to local community, so I think competition वहाँ थोड़ी कम हो रही है. I think if you like, just if we say कि अगर हम we were competing with thousands of people, अभी वो कम हो गया है और अभी थोड़ा motivation कम हो गया है काम करने का. So I think that is a big challenge of putting quotas for local jobs. So I think that's my point. Yes, Sumit has a valid point. Sumit has a valid point. If outsiders are coming and working here, then the locals also will compete to match up their talent and skills. And they also upskill themselves and they also give a tough competition to them. The thing is, it is very puzzled here. People have a mindset that they have to go outside to get a better job.
and in that way nobody is focusing that they can stick to his in their state and they can work. Mm-hmm. Okay. सर, if I may add on to that point. Yes. सर, आपने कहा कि लोगों को बाहर जाना है और काम करना है लोगों का, लेकिन लोग घर पे रह के भी काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये लोगों के क्रिएटिव स्पेस को बहुत कम करता है। आई थिंक कंफर्ट जोन में जब लोग रहते हैं, वहां पर वो उनका जो क्रिएटिविटी होती है या फिर उनका जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा थम जाता है। और आई थिंक वो अपने जो शेल कहते हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आई थिंक आपको काउंटर करने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक लोगों को बाहर एक्चुअली जाना चाहिए टू एक्सप्लोर डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कल्चर्स। लोगों का मन बहुत खुलता है टूवर्ड्स डिफरेंट पीपल, टूवर्ड्स डिफरेंट लोकेलिटीज। जैसे कि आई ऑल्सो कम फ्रॉम उड़ीसा, लेकिन मैं अभी बैंगलोर में हूँ। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं सीख सकता था अगर मैं घर पे रहता तो आई थिंक। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन में भी रह के बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि वो अपना स्पेस चेंज करेंगे तो आई थिंक दे कैन बी मोर क्रिएटिव, दे कैन बी मोर मोटिवेटेड। सो मुझे लगता है कि ऐसा हाँ, अगर घर आप से निकलना चाहिए लोगों क्रिएटिविटी को। की बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट प्लेस में प्राइवेट जॉब के लिए भी नहीं आएंगे, वो कुछ और कर रहे होंगे। और ये मैं किसी को बांध नहीं रहा हूँ कि उनको आके वो प्राइवेट जॉब में ही जाना है या बाहर ही जाना है। वो ओपन है, अगर वो बाहर भी जाना चाहते, कोई लोकल बाहर भी जाना चाहते तो वो जा सकते हैं। पर उनके लिए वो फैसिलिटी उनके स्टेट में भी होना चाहिए, क्योंकि Okay. सब कोई नहीं जा सकते। आप, मेरा घर यहाँ पर है, मेरा घर बिहार में है और मैं बैंगलोर में जाऊं, वहां पे 50,000 का रेंट भरूं मंथली और 5 लाख का डिपॉजिट दूं, वो तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ। Mm-hmm. तो मेरे लिए जाना ही मुश्किल है, पहली बात। और मैं एक जॉब के कारण मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टेट में वो फैसिलिटी नहीं है। See, Vaibhav, few years ago, this was the same scenario within India and abroad. People used to migrate to other countries for job purpose. Okay. Now the opportunities are so well established within the country. I agree that there are only few cities which are developed. Okay, but at least there is some development within the country that people have options now that they are just moving state to state from one state to another state, that is another city, rather moving countries. So this is at least But a first but step in Nazma, the but growth. but Nazma, they are moving to only to those cities which are developed, not to every state. Yes. Yes, I agree there are five major cities which are हाँ, developed exponentially in India, but this is at least a good and a अगर transformative अभी change which has एक किसी happened. लड़की को शादी भी करना है तो वो बोलती है कि मुझे मेट्रो सिटीज में शादी करना है। दिस इज द थिंग राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। Yes. हाँ, तो आप सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वो चीज हमारे स्टेट में अवेलेबल नहीं है और सब लोग अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। उनका केयर कौन करेगा? That is another topic of discussion. That is हाँ, of क्योंकि इट इज रिलेटेड टू जॉब। related only. But earlier हाँ, people used to go abroad to other countries, leaving their parents, leaving their entire family. Yes, Rekha ma'am, please. You have to unmute. Please unmute. Unmute कीजिए. माइक अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो, बोलने से पहले। हाँ, go ahead. हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि कोटा क्यों दिया जा रहा है? हाँ, मतलब कास्ट के हिसाब से कोटा क्यों दिया जा रहा है? कास्ट की यहाँ बात पे नहीं है, एबिलिटी यहाँ की पे बात कास्ट है। की बात कास्ट नहीं की है। बात नहीं है, कास्ट की बात नहीं है। एक्चुअली कोटा ये है कि लोकल्स को को, ज्यादा काम पे लो। हाँ, तो लोकल को काम पे ले रहे हैं तो उनकी एबिलिटी भी है, तभी तो लोग बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो आके काम कर रहे हैं ना। हाँ, अगर यहाँ के लोकल लोग को इतनी एबिलिटी रहती तो वो अपना काम क्यों छोड़ते? कहने का ये मतलब। हाँ, लोकल में टैलेंट नहीं है या फिर लोकल लोग काम नहीं करना चाहते, वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये दूसरा टॉपिक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया है कि आप एक कोई भी, अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ, अगर मेरे 100+ एम्प्लॉयज हैं, तो उसमें मैं इंश्योर करूंगी कि अभी तो कोई कोटा नहीं है, मैं चाहे तो 100 के 100 एम्प्लॉयज बाहर से मंगा के रख सकती हूँ अभी के लिए, लेकिन नहीं तो फिर गवर्नमेंट ने मैडम ऐसा बनाया है कि फिर वो अभी
एक इतना परसेंटेज, फर्ज करके चलो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, 50% है कहीं कहीं, तो 50% मतलब 50 लोग लोकल से होने चाहिए, विद इन द स्टेट के होने चाहिए। बाकी के 50 आपके पास हम्म ऑप्शन है, कहीं से भी ले लो, चाहे लोकल ले लो चाहे हम्म बाहर के हम्म ले लो। तो ये जो हम्म। रूल बनाया है, ये कहाँ तक सही है या इसमें क्या गलत हो रहा है, ये इस बात पे नहीं बात वो है, इस पे कुछ कास्ट क्रीड हम्म कलर की बात नहीं है। नहीं तो फिर क्या है ना कि एबिलिटी आपके अंदर नहीं है तो जबरदस्ती अगर लिया जाएगा ऐसा तो वो कहीं नहीं काम बोला में गया आपको कि बहुत एबिलिटी अच्छा नहीं नहीं है, ऐसा मिलेगा। कहीं नहीं बोला गया है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि आप में नहीं है, आप एबिलिटी की बिल्कुल बात नहीं ट्रेन हो कर रही है। सकते हैं, आप वही बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं। हमने वही बात पहले पहले पॉइंट में यही बात आकाश ने उठाई कि कंपनीज को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर ये कोटा हम्म लागू होता है, ताकि So हमको लोकल्स anyways, को company ट्रेन करना spend है। money on the training part. If suppose Akash joins Bipro today, and he will be put under the training first. यस यस, आई नो, आई हैव बीन अ ट्रेनर, आई नो कंपनीज पुट अंडर ए ट्रेनिंग प्रोसेस, लेकिन जो एंट्री लेवल का स्किल है वो तो रहता है ना। अभी मान के चलो कि आप ऐसा ऐसा जॉब के लिए, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए एक पोजीशन एनरोल कर रहे हो, उसके लिए आपको 50 लोग चाहिए, तो यहाँ पे वो बेसिक स्किल तो आना चाहिए किसी को। But अगर वो on बेसिक what स्किल ही basis? नहीं है, On what basis you are challenging that they are not skilled? Do you have any evidence or नहीं any एविडेंस नहीं है, experience? अभी एविडेंस नहीं है कि कंपनीज को ज्यादा, हो सकता है कि स्किल हो सकता है कि लोकल में ही स्किल मिल जाए, लेकिन अगर लोकल में नहीं स्किल, तो आप बताइए, रेखा मैम क्या नहीं हो बता रहे सकता हैं कि कि बात नहीं होती है, हो सकता कि बात नहीं होती है, आपको ये बताना जरूरी है कि क्यों नहीं, मतलब आप किस बेसिस पे ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्किल्ड नहीं है। हो सकता है बाहर का इंसान भी आया हुआ, उसको एक अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती हो, और वो सर्विस कंपनी में हो जहाँ पे उसे यूएस क्लाइंट से डील करना हो, तो ही इज नॉट डीम फिट, तो वो कैसे कैसे वो भी तो मतलब कैंडिडेट राइट नहीं है। हाँ नहीं है, राइट नहीं है। तो I उसको भी want to उसको भी keep the स्किल one सीखने की point. जरूरत है, सबको स्किल सीखने की इक्वली जरूरत है। हाँ बिल्कुल Okay. वही है पॉइंट, हम ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास देखो, रिजर्वेशन का एक क्या बोलते हैं, एक सरकमफ्रेंस नहीं डालना चाहिए, रिजर्वेशन का दायरा नहीं होना चाहिए। कंपनी शुड बी फ्री टू हायर एनीबडी। हम किसी का ग्रोथ क्यों रोकें, अगर लोकल में टैलेंट है तो वो आके काम करे, अगर हम बाहर से मंगाना चाहें तो वी कंपनी शुड बी फ्री टू हायर पीपल। I agree with this. I completely agree with this. But I'm saying why companies are not in Bihar, why not in Uttar Pradesh, why private these companies are not everywhere in every That is a state. total different topic, Vaibhav. What you're talking is the That is progress. why we have to bring this reservation in the picture to Then safeguard. the topic should be why the government should invest Yes, in tier two that is city a and tier one different city. topic. How मैं भी आकाश से एग्री Karnataka करता हूँ। आई थिंक government, see how Karnataka government has implemented and taken the steps to ensure that city becomes global, and they invited the foreign companies to come and open the companies. The same initiative other states could have taken. Right. They did not implement those steps. They were focusing majorly on something else. So that's why that growth exponentially did not happen in those sectors where people are seeking the job and growth. Correct. Okay. So moving forward to the debate, so I Yes. want to put one more point. So excluding the employees who are earning 50,000, 1 lakh rupees a monthly and getting jobs from placements from top universities. A code, we should also talk about those people who are not earning 20,000, 30,000 as a watchman or as working as a helper. Like people who come from I know many people in Bangalore who come from cities like Bihar, Assam, Orissa, Jharkhand, and they have put up their business here. They have come from that far from by train to put up a business, and not that like they're not doing some job. Some people are doing job as a watchman. Some people have opened shop their own, and they're earning a lot of money in the cities so that they can give their food to their family in their Yes. homes. If they we put a quota here for, like, say, if you're putting quota, say watchmen should be only from this state or from the city, from the state. And so what about those people? Won't that will also affect through quota? They won't be able to get money. आकाश, आपके हिसाब से कितने लोग होंगे जो एक साल में या मतलब इमिग्रेट होते होंगे?
एक स्टेट से कितने परसेंट आई लोग थिंक इंडिया में इमिग्रेट नहीं, माइग्रेट इज द वर्ड। हैं? एंड मतलब मेरा कहने का हाँ, मतलब था कि दूसरे स्टेट से कितने लोग आते होंगे बाहर, या बिहार से कितने लोग बाहर जाते होंगे, कितने प्रतिशत लोग? देयर विल बी लाइक थाउजेंड्स। मैंने तो बहुत लोग देखे हैं जो मिले हमें। नंबर्स नंबर्स, परसेंटेज नंबर। बिहार से देयर आर 50-60% पीपल दे आर माइग्रेटिंग फॉर देयर जॉब्स, बट उनकी फैमिली दे स्टे देयर ओनली। दे आर क्रिएटिंग इकोनॉमी फॉर दिस स्टेट। पीपल आर कमिंग मेकिंग इकोनॉमी फॉर बैंगलोर। ठीक है, यहाँ पर पैसा कमा रहे, यहाँ को टैक्स आएगा। आई थिंक मैं नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन आई थिंक बैंगलोर में कुछ लाखों के करीब करीब लोग माइग्रेट होते हैं। और मतलब वो 10 लाख 20 लाख प्लस जाता है जहां तक मुझे पता है। तो आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 20 या 30 लाख के करीब करीब 30 या 30? उसके रेंज में एवरेजली आई थिंक 20-30 के उसमें होना चाहिए। आदित्य डेली कुछ बोल रहा डेली, है। मंथली, ईयरली? माइक ऑन करो आदित्य। Yeah, you मतलब are यू। on mute. So, Ramya, Aditya, हाँ, I want रम्या, you to आदित्य, contribute, विवेक जी, लेट्स and हियर Vivek, फ्रॉम देम। please contribute to the conversation here. हाँ, I think approx 20, 22 lakhs. Now, Vaibhav, there is no question of knowing the No, numbers here. yeah, uh, what you want to No, counter my point? I wanted to make a point, but let it go now. I Okay. wanted to make a Yes, point. Vandana, you have raised the hand. Tell me. Basic, you just like Nazma ma'am has said that why reservation is needed. So reservation is needed. Many were selected in private jobs by their interview, by their skills. But reservation from those local peoples who didn't try, who can't speak, who can't stand for themselves. So reservation is for them. And Akash has did a question that many foreigners come and many people come from other cities for jobs, for private jobs. Like I have seen in private schools, some teachers were coming from other place to teach, to support their families for morals, for economically. So if they will connect it to our NGOs, they can also be work at their locality. If we will make NGOs in rural areas, we can develop that type of facility also there. That uh, many people have seen locals who are uh, what preparing for government's exams and for supporting they coming to others urban cities which are a little bit developed or developing for supporting for their families economically their country. So that is the purpose. That's why the government has got for local private jobs reservation of 50% to support the peoples. And recently, I studied a question that Karnataka has reserved only 50% and 75 are non-reservation. 50 government has reserved for people to support people who can't stand for us for giving some people shy to give interviews. So people get motivated there by them. This is my opinion. Thank you. You are mute. Yes, sorry. Yes, Vandana, good point. To counter her point, if anyone want to make a point, Ramya, would you like to shed some light on this? Come on, Rami, it's okay. There is nothing like right, wrong, or Yes, perfection. anything is okay. Just feel free, speak some what ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ you like. ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ರಮ್ಯಾ? No one is judging you. No one is. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
Okay. Okay. What Ramya understood, and do you want me to translate? If possible, you can. Yes, what she is saying is the same thing, that if the reservation is given to locals, then the talented people are left out. The talented folks who are there with other states are not allowed to take up the job because the reservation is a compulsion. So that is what she meant to say. I have a small question. Means an example. If in a family there are two kids and the younger kid falls sick and the financial condition is also not that good of that family, they can afford only 2 glass of milk. So whom they will give the preference? The healthier one or the sick one to drink the milk, and he is in the need of milk or nutrition. So you want to say the local people are Sick. sick, so that we should give more preference to them? Not sick, but I'm not saying that talented people also, if they are really talented, they will find the job. The point which I wanted to make. Mhm. But if the quota and reservation is there, and they'll get a mail that since due to the quota you are not They're being really selected. talented. They can do entrepreneurship. They can start their business. They can get into government jobs. A lot of things are there. Why they have to get into the private job? And still 25% is there and the 50% is there. They can get it easily. Okay. See, Yes. yes, Uh, yes, one yes, point. yes, Akash. Okay. Go ahead. Already. Okay. About skilled people, they will find their jobs. Locally, people of any state also can find a job if they are skilled. And if you look into IITs, IIMs, they already have some reservation. If people who are the local people who are not much well, they already get through into IITs and IIMs, and they will get private job only through that. They won't get government job through IITs and IIMs. So indirectly, I'm saying the quota was put forward by Dr. Ambedkar Sahab only because they were not that well off. They were treated and very differently like others, and they were not. Good point. That time when this type of laws were introduced, that time the scenes were different. That time there were more decisions were made on caste, creed, color, and race, and a lot of other social stigmas were there. So to empower these people, they had put forth certain laws. Now we talk about so much of equality. Now there is no gender discrimination at workplace. There is so much empowerment has happened that everybody deserves the right to work freely across borders. That is within the country we are talking about. And to answer your question, Vaibhav, that you told that why only job, why not entrepreneurship? See, I'll tell you, in India, 90% of the people are middle class. You agree on this? Yes, Yes yes, or no? You agree on this. yes, 90% are yes. middle class people. And middle class people from the childhood, the only conditioning happens to the children and within the family is most of them as we grow, even we within my family as well, we have grown up seeing elders in job. In my family, in my extended family, nobody had businesses. Everybody were going for job. Okay. So what is the conditioning comes to the child who And grew up with this environment, that ultimately after the schooling, after graduation, I have to secure a job, support my family, support my own self, enough of Yes. taking money with parents. To start a business, it is we need a lot of skills, lot of experience, and lot of talent. If I do not have the exposure of business within the family, how will I get the mindset of doing a business? See, even people have taken up jobs and later they have started the business, but you initially are to start a contradicting. career. You are contradicting your point. Then you just have little Madam, empathy for the people who are locals. They also have the same conditioning, right? And they expect something from the state government, means from the state, that they should provide something to them, some little ease of working. मेरे को एक बात Mike, Yes, Mute है आप, Vivek. mute. unmute. Vivek, go ahead, please.
मेरे को एक पॉइंट कहना था कि जो हम अभी लड़ रहे हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहा है हमारा। पहला चीज है कि जब पूरा इंडिया वन नेशन वन रूल एवरीथिंग है, हाँ तो हमारे को इंडिया में एक्चुअली रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन वो स्टेट वाइज नहीं होना। स्टेट वाइज जो हो रहा है, स्टेट में इतना होगा, उस बिहार में इतना होगा, बंगाल में इतना होगा, कर्नाटक में हो, उसके ऊपर उठना पड़ेगा हमारे को अगर रिजर्वेशन चाहिए। इंटरनेशनल से, कि बाहर से जो आदमी आ रहा है और इंडिया में जो रह रहा है, लोकल रिजर्वेशन तो जरूर होना ही चाहिए बेनिफिट के लिए। बट वो कर्नाटक या स्टेट वाइज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश एक ही है, पूरा डेफिनेशन एक ही है। हम इसको डिवाइड करने में लगे हुए हैं कि कर्नाटक में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं। ये तो पॉलिटिकल इश्यूज है। मेरा हाँ अपना मानना है कि भैया पूरा इंडिया एक है, जब वी कैन ट्रेवल एनीवेयर, रूल्स एक है, लॉ एक है, सिस्टम एक है, टैक्स एक है, देन व्हाई वी पुट रिलेशन फॉर दैट पार्ट। स्टेट के लिए क्यों रिलेशन करना है? रिलेशन करना है वह- पूरा इंडिया के लिए करो ना भाई। हाँ, वही बात। भाई this is valid point. I know, give a हाँ, clap for that. मैं यस भी एंड मैं विवेक पोदार से सहमत हूँ। हाँ वही बात है कि फॉरेन में हम्म, इतनी अपॉर्चुनिटी जो अच्छी है, कोई फॉरेनर यहाँ आके जॉब करना नहीं चाहेगा। करेगा तो ना। ये तो आपको स्टेट स्टेट वही तो स्किल डेवलप करना है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग देना है, स्किल डेवलप करना है, अपॉर्चुनिटी पैदा करना है। जैसे कहा कि कर्नाटक में अपॉर्चुनिटी मिला, तब दूसरा स्टेट से यहाँ आया। हम इतना डेवलप करें अपने कंट्री को, द पीपल विल कम फ्रॉम आउटसाइड। वो होगा, एक दिन वैसा भी होगा कि बाहर हाँ से आदमी आके यहाँ नौकरी ढूंढेगा। हम वो होना मौका देंगे ना। हम आपस चाहिए। में क्यों लड़ रहे हैं? भाई भाई लड़ रहा है, स्टेट स्टेट, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लड़ रहा है। हमको रिलेशन तो देना ही है, तो जो लोकल है, बट नॉट फॉर लोकल। मतलब पूरा इंडिया एक हो, जब एक नेशन एक सब चीज चल रहा है हमारा पूरा, फिर क्यों हम दो और ये तीन में जा रहे हैं? दिस इज माई हम्म, ओपिनियन। हाँ, बेनिफिट मिलना चाहिए लोकल को, कि अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो दैट्स डेस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो लोकल को सपोर्ट मिलना चाहिए, दैट्स माय ओपिनियन। बट नाउ द विजन इज दैट नाउ इंडिया इज वन। हाँ ठीक है, स्टेट अलग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया एक है, एक ही डेफिनेशन में चलना चाहिए हमारे को। हाँ, इंटरनेशनल नेशनल में कंपेयर करें तो अच्छा है। दिस इज माय ओपिनियन ओनली। so that is the valid point we are also making, that रिजर्वेशन का एक सुमित इम्प्लीमेंटेशन सुमित जरूरी माफ। नहीं है। हाँ, सी whoever is talented, be it local or be it outside the state, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, and they are free to work. And one more important thing what happens is, इक्वल if अपॉर्चुनिटी से आप क्या समझते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी से आप क्या समझते हैं? फिर वही बात होगी ना कि एक इंसान अगर सिक है और एक इंसान हेल्दी है, तो दूध आप किसको दीजिएगा? this example, I don't think it is relevant here. नहीं, आपके थिंक करने से नहीं होगा ना, मेरे भी थिंक करने से होता है। रिलेवेंट ही नहीं है ये एग्जाम्पल, यहाँ पे ये बैठेगा नहीं, ये उदाहरण यहाँ नहीं, पे तो चलेगा नहीं। आप मेरे को ये बताइए, इक्वल अपॉर्चुनिटी से आप क्या समझते हैं? पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब देखो, कैसे? विद इन द कंट्री फ्री हम्म। है सब कुछ। क्या है, दे मैं हैव टू थोड़ा सा मूव बोलना फ्रीली। चाहता हूँ, जहाँ एक टीयर 2 या टीयर 3 का बच्चा जब बड़ा होता है, जिसको उतना फिनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, और जब फिनेंशियल सपोर्ट नहीं होता तो वो घर के काम भी करता है, सुबह में हो सकता है न्यूज़पेपर भी देने जाता है, रात शाम में किसी घर में दूध डिलीवरी भी करने जाता होगा। तो उस बच्चे को पढ़ाई करने के साथ साथ घर की भी काम करना पड़ता है, जब तक वो ग्रेजुएट होता है। तो उसकी उम्र हो जाती है 24-25 साल, जब तक वो ग्रेजुएशन करता है। पर वहीं जहाँ एक सिटी का बच्चा होता है, उसको इतने लफड़े नहीं होते हैं, वो 20 साल में 21 साल में पढ़ाई करके ग्रेजुएट बन जाता है, और इतना कॉम्पिटेंट होता है, इतना एक्सपोजर होता है उसके पास, कि वो कई लोगों से मतलब compete कर सकता है उस एज में। पर एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी का बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। अगर आप आई सम... डिसएग्री विथ यू। नहीं मैं अप्रोच वैभव के बात से डिसएग्री है। ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। टीयर टू टीयर सिटी वाला लड़का लोग ही आज के दिन झंडा फहरा रहा है। इंडिया इतना बैकवर्ड बोलता है, वर्ल्ड में इंडिया का ही आदमी टैलेंटेड आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि तुम इसको टीयर टू सिटी से आया तो उसको मौका नहीं मिल रहा। मौका मिल, ही गेट मोर अपॉर्चुनिटी। वो घर का काम भी कर रहा है, एजुकेट भी कर रहा है, और सारा चीज, ही इज आप ऑलराउंडर। सेम टीम में है ना? सेम अच्छा। टीम है, लेकिन अरे बात समझ में रहा हाँ, है। गुड टीम पॉइंट। सेम है, लेकिन कोई पॉइंट अगर गलत हो रहा है तो उसको तो सही करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला जो आप बोले थे, इसलिए कोई बात, हम्म। वही यस पॉइंट। वंदना, प्लीज गो अहेड। सुमित सुमित, फर्स्ट सुमित। हाँ सुमित, सुमित गो अहेड। नहीं, अब मैं जो बोलना रहा था आप सभी लोगों ने बोल दिया सर। मैं आपके पॉइंट से बहुत सहमत हूँ कि इंडिया पूरा एक है। मेरे मन में एक पॉइंट चल रहा था बहुत टाइम से कि अगर ये रिजर्वेशन एक, हम बस बैंगलोर की बात करें अभी, बट अगर ये किसी भी स्टेट में होता है तो आई थिंक कि ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन या फिर एक काइंड ऑफ नेशनल वाइड टेंशन जो हर एक स्टेट में खड़ा करेगा।
आई थिंक ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी। और आई थिंक ये चीज जो है, जो यूनिटी को आई थिंक इंडिया की ब्रेक कर सकती है। बिकॉज व्हेन यू आर सेइंग दैट कि तुम लोकल्स को रिजर्वेशन दे रहे हो, आई थिंक यू आर सेइंग दैट कि यू आर नॉट, यू आर काइंड ऑफ नेग्लेक्टिंग अदर स्टेट्स, यू आर काइंड ऑफ डिमीनिंग अदर स्टेट्स, जो मुझे लगता है मेरे व्यूज में गलत बात है इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया डजंट रिप्रेजेंट दैट, इंडिया रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी। इंडिया कल्चरल इंडिया यूनिटी। इज अ यूनाइटेड कंट्री। तो आई थिंक ये एक चीज है जो रिजर्वेशन बहुत गलत कर सकती है, इंडिया को तोड़ना, जो सर ने कहा था वही अभी। तो अभी मेरे एक ख्याल से और ये है। चीज हमने ऑब्जर्व की है कि when people are moving so frequently among the borders within the country, there is a lot of cultural exchange that is happening. मतलब So people are get to know lot of cultures जो हमको पहले exposure नहीं था. See, if you want to know any other state's culture, we used to earlier, read about it, or search on the net or watch some documentaries based on that, or travel. अभी लोग इतना आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं कल्चर्स, अपना क्विजीन, अपने रिचुअल्स, अपना रूटीन्स, सो पीपल आर मोर अवेयर नाउ. तो दिस ऑल्सो हैज गिवन दी एक्सपोजर टू क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एंड क्रॉस कल्चर बॉन्डिंग. तो इसके ऊपर एक रिजर्वेशन का स्टैंप लगाना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा. कंपनी शुड बी मोर फ्री टू हायर एनीवन, whoever is coming, be it local or be it outsider. तो जैसे अभी विवेक जी ने भी बताया कि अगर लगाना है तो ऐसा लगाओ कि फॉरेन वाले आने के लिए रिजर्वेशन लगाओ, देन इट विल बी हम्म। वर्थ इट. और टेकिंग एग्जांपल ऑफ कर्नाटका ओनली, सिर्फ कर्नाटका में दूसरी जगह से लोग नहीं आते, कर्नाटका से भी लोग दिल्ली, मुंबई, हाँ. कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी दूसरी सिटीज जाते हैं जॉब के लिए। तो अगर यहाँ पर रिजर्वेशन लगाते हैं तो वो अपोज पोजिशन भी आएगी कि क्यों उनको वहां पर फिर जाने को मिल रहा है। वाई यस. फिर उनको भी दूसरी सिटीज नहीं देंगी जॉब, कि आपके यहाँ तो 50% रिजर्वेशन, हम आपको जॉब क्यों दें। यस, रेखा मैम, यू हैव रेज्ड द हैंड, प्लीज गो अहेड. नहीं, पूरा बात सुनने के बाद मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे बोला ग्लोबल हो रही है हर चीज, हर चीज देश विदेश में जा रही है। अभी जैसे रिसेंट में छठ पर्व गया, आप देखे होंगे कि पूरे वर्ल्ड में ये छठ पर्व गया जो बिहार से स्टार्ट हुआ था। हाँ, पहले तो हमको पता नहीं था. ये पर्व मुझे सच में पता नहीं था, ये अभी इस सच बार है, पता हाँ। चला. क्योंकि बहुत सारे यहाँ के जो हैं वो उधर से हैं, बिहार से हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल है. Okay, वंदना। we'll conclude now. We have spent a good amount of time. Yes, yes. Anybody wants to give a conclusion points? Vanna. Yes, yes, Vandana. Are you talking about equality from uniting a country, India? I agree with also that uniting is a very important thing right now. The country is going diversity in diverse, but united is very important. You are taking a conclusion that reservation not will be there. So for improving that, we have to improve our rural areas. Why people are coming from rural to urban? Because they got facility. So we have to work on our rural areas, our agriculture fields. Then we manage to sort out this problem of reservation and non-reservation. The talented people will be also got a chance, and locals also will be got chance. We will work on our economic, our financially, our rural areas, our development. We are developing countries, so we can develop our ways, our companies, our businesses like this. That uh, that why foreigners get are Indians visiting in foreigners to study there, work there, job there, because they have a facility, they have jobs, they have study materials. The students get good education there. So we also have to develop in our country that type of facility. So Yes. that time we will get equality.
Yes, Vandana, what you are suggesting is instead of giving the direct reservation, we have to focus on two major things. One is the education and development of skills within the local, which we will come back to the point where Vaibhav initially made, that why people has to migrate, instead why not develop companies in their own states. So yes, we have to focus this on a larger scale. The decision making authorities have to initiate the steps to firstly enhance the education. Today's education, if you talk, it is not industry specific, because I know what the graduate person comes out and he is not employable. The companies has to initiate the training. So why not the education should be at the level of industry standards, so that a person who is graduating knows what work he want to do. He has that much of clarity in his mind. And additionally, the government should initiate skill development so that local talents get hired within their set boundaries. And yes, this exposure is allowed, should be allowed rather, that nobody should put a hindrance on people if they want to migrate to other cities, right? So that should not be a challenge for others. So ये हमारा conclusion point is ओ, this, ये that हाफ एन आवर का डिबेट था ना वैभव भाई, ये अभी 1 1 घंटा हो आवर। गया। हाँ, तो द डिबेट मस्ट बी कंक्लूडेड नाउ क्या? कंक्लूजन वी पार्ट में ही हम हैव लोग, वी हैव टू yes. इतना So the हॉट रिस्ट्रिक्ट द टाइम conclusion आल्सो। हॉट part is डिबेट हो this गया। only. The conclusion part is this itself, that instead of putting a direct reservation, the authoritating bodies should enhance more on education and skill development, so that the local talent gets hired within the geographical boundaries. One thing, Completely Without agree with losing that. the we have to create job opportunity all over the yes, India, even yes, city, town, village, everywhere. Now we have to create job opportunity everywhere. हर जगह फैक्ट्री लगाओ, हर जगह डेवलप करो, तो अपने आप ये सब क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव टू रिलेशन इज देयर फॉर इंटरनेशनल, कि इंटरनेशनल से आएगा लोकल को उनको इतना ही वोकल दे सकते बनाना हैं। है, बस हाँ, दैट्स जो प्रधानमंत्री का लोकल को मैसेज है। वोकल बनाना है, मोदी हाँ, जी का आइडिया। जो सर उनका आपका आइडिया है विजन बहुत अच्छा है। उनको, तो उसी को लेके चलना चाहिए हमारे को। और हम आज बैंगलोर में आ गए, उसके बाद भी हमारा फोकस है गांव में कैसे, जहां से हम आए हैं वहां पे कैसे फैक्ट्री लगाए, वहीं एम्प्लॉयमेंट दे दें, जो स्किल है वहीं पे दे दें। तो कोशिश हमारा वही है, अभी भी यही है। तो सबसे वही है भाई, कोशिश अपना टैलेंट को बढ़ाने की कोशिश करो, जहां पे रहोगे वहीं पे जॉब क्रिएट हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। हम कोई सब इंडिया, साथ हैं। हाँ बस इंडिया एक ही रहे, कोई इधर उधर का चक्कर में नहीं रहे हम लोग। ये सब डेफिनेशन ही अपने आप को कन्फ्लिक्ट में डालता है और हमें गलत दिशा में लेके जाता है। तो बेटर है कि वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट फॉर दैट पार्ट, कि भैया ये अपना देश है, हम कहीं भी जा, ताऊ के यहाँ, चाचा के यहाँ, मामा के। spectator. Hey, hi Varsha, where were you? You did not turn on the camera. Hi everyone, she is Varsha. She is the co-coach. And why you know Vaibhav, right? आई एम नॉट No? अवेयर ऑफ। He is from same IY community of विल ours. डिस्कस दिस ऑफ Yes, ऑफ yes, we can discuss later. Yes. So Sumit, you are joined for the first time. How is your experience with this conversation? Definitely got to learn a lot. I struggle a lot with speaking in public and in front of people, so I think I spoke somehow something. So मुझे अच्छा लगा. All right, good to go. We will remove all the inhibitions going forward. So keep it up. Good work. Then others. रम्या, for Ramya, Ramya? it was little challenging, I felt. नहीं, रम्या इज वेरी कंफर्ट स्पीकिंग कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश। नाउ यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हाँ मैडम। Yes, Ramya, you can unmute. Yes, ma'am. Yeah, you can share your observation. How was the call today?